Guys, let me go to the questions. I'm opening the first assignment, okay? Okay. So here, I have already connected to the system. Let's connect that from the beginning to show a complete session. I am going to this cell. It is my Mac system. I'm connecting. So making the system bigger. Okay. Then I'm connecting to this EC2 instance by the password. Here the question set is this. So guys, are you able to see me? Yes, sir. Okay, very good. So always I will not come in front of you. Sometimes I will come. Okay. So let me take a snap of this actually. It is required to me. Okay. Now some people are asking for the things like they want to join, but unfortunately I could not able to allow them because of the strength. Okay. So it's okay. How to make that video off? Yeah. See. Don't write anything, please. Don't write anything in my screen. It's a common session. Who is chatting something like? Okay, let's start. I have already opened the some people are going again and again and coming back. So I am not going to admit so to now I am doing the session. First question is like, what is the difference between single quote and double quote? Anybody can tell. I will also, I would like to ask the people. So people can take participation in this session also. Can anybody give the answer? Name. First tell your name, then start. Yeah. Yes, sir. Who are you? So who want to tell what is the difference between single quote and double quote? Anybody? Please come front. Sir, hello. Yeah. Sir, difference between single quote and double quote is when we write a string in single quote with variable, it will show only the variable, not its value. But when we write it in double quote, it will show its value in the output.
Yeah. That's main difference. Yeah. Yeah. So I think Himanshu told this, right? Yes, sir. Thank you, Himanshu. So you came front and you have told the things. It's actually perfect. So go mute actually. I'm muting all. So guys, why only Himanshu told? So that you guys didn't come. Okay. So please clear your stage factor first or okay, to be strong in any type of technology. I am telling. Suppose I am declaring one variable. I have a variable called name equal to, let's say, Navendu. As I already stored this variable in value inside a variable, I want to display this Navendu title using this name variable. Okay. So what to do here? Suppose I want to make a string like uh, it's a student data. Student data. Okay. So student data will contain, let's say, please go mute. Okay. So student data will contain, let's say, like name and course. Name and course. So I want to store this name inside that student course. STUD underscore COURSE equal to, if I am putting, I want to use this name inside that variable, then let's say the student is having the course COURSE is course equal to, let's say, data engineering, DATAENGINEERING, data engineering. Okay. So I want to store these two values inside another variable using the variable name and course. STUD DATA equal to, if I am putting them inside a single quote, dollar name, I have already told you, okay, this comma, then dollar course, COURSE, then it is going to store there. But what it is going to store, I want to check. Dollar STUD student data is taking this, because as I have kept the variable name, these are two variables, right? So I wanted to display the variable's value, or I want to store the variable's value in student data. These are two variables which are going to show their variable. If I am not showing them in the screen, then they are going to store inside the student data variable in this concept. Okay. As I have put that two variables inside a pair of single quote, the variables could not be substituted with its value. Now what I will do, I will do the same thing, but instead of single quote, I am putting a double quote. So now if I will echo student data, now you will get this Navendu Python, comma data engine. Okay. So guys, this is the answer of first question. Next, go to the second question. Difference between OS and kernel. It's a theoretical question. I have already discussed the same thing, but still I want to tell the answer of this. Kernel is nothing but it's responsible for, it's a software. Okay, it's software which is responsible for 5 works. Like I have told you that process management, memory management, IO management, then the file management, then resource management. These are the managements which are happened inside the system. So kernel is responsible for all these tasks, and OS is nothing but it's the kernel plus some other softwares like Notepad++ or any VI editor. So these are the other softwares and some security softwares, user management softwares. Okay. So then some application software along with the kernel is called OS. So elaborately, I have discussed the same thing inside the in the session. That is, if you go in the YouTube from first section till 20th section or 21st section, then you will get all the things. Please go to my YouTube channel. So basically here I want to show you that YouTube channel also. So please follow me. Next time, please don't ask me also. So here my YouTube channel is there.
I am going to youtubechannel. So okay, so our youtube.com, you can press youtube.com. Okay, youtube.com. Okay, so I'm going here, and in this bar, in this search bar, just type Teach Bharat, TEACHBHARAT, then Linux, LINUX, SHELLSCRIPTING. Once you will type this, you will get this video. Okay, not top video, this video, this type of logo. If you are getting, so here you will get like this type of this is my logo of this Teach Bharat. So go to this, and The demand for full stack here developers. click here. Okay, here click in this place, right? So once you will click this, so you are in my channel. So go to the playlist. This is my channel, guys. This is my logo of my channel. So go to this playlist. So go to the video which is containing more than 24. Okay, here there is a big list. Okay, Linux shell scripting. You will get a Linux shell scripting playlist, and click here, view full playlist. You will get the videos from 1 till 24, but don't go to 23 and 24 unless until you are not crossing this 22. So from first video till 22 video is containing the video of, or containing the session of my first class. Like class started from 19th February till 19, 20, 21, 22, 23, till 23, all the things are there. So today only I have added this ps command and kill command. Okay, I have added this ps command and kill command, and cron command is also added, which is not discussed to you. These three commands I have added, which is not discussed within your class, but I have properly done that video or properly done that recording. So please guys, go through all these videos from 1 to 22 for the commands, and these two are for the first two shell scripting classes. Okay, so next time please don't ask me anything, you just go and search. Okay, I am going to the this assignment first. So you have already we have already discussed these first 2 points. What is the role of shell in Linux? As I told, here wherever I am executing the commands like ls or date, this particular place is called a terminal. Inside the terminal there is, it is called prompt. So in this prompt I am able to type something. Let's say I am typing ls. So ls is a command. So normally in front of the command we can execute, we can type anything, and once pressing the enter key, it is going to execute. If the command is good, means command is right, then that is going to execute. If the command is wrong, then that is going to give an error. So what is the work of shell here? Now whatever commands we are typing in the terminal in front of this prompt, that shell is going to take care of the command. So it is taking this as an input, and it is searching in the whole list of the commands. If it not finding the command, then it will give the error. If it found, so how it will go, as I told, when any command, let's say date command I am executing, it will first take this date command is perfect or not. It will check. If this date command is perfect, how it will check? It will go to the path variable. So echo $path I'm telling. So this path variable, so this particular date command is going to be searched everywhere. So already I have talked about this, how to convert something, right? So how to convert something to something. So there is a command called tr. Okay, there is a command called tr. So let convert all the colon into /n. So like echo path, then tr, then colon into /n. So I am doing a /n here. So it is converting all the colons into /n, so that all the paths I am able to see. Okay. So whatever. So as I told,
this command is showing me all the things, right? So when I am executing the any command DAT, that cell is taking this date and it is searching in all these paths. So somewhere it is going to get that the address of this particular date command. So how it is getting? It is executing the which command first, WHICH, which date. So just see, this date command is getting any of these particular paths. This is one path, this is another path, this is another path, this is another path. So yes, my date command is getting from user bin. That's why once I am executing the command date, so it is going to path variable and it is finding its path. Once it is finding the path, it is executing that command. Okay, so cell is responsible for taking the input from the user, and all the inputs which are taken by that cell, they are called commands, and the commands are being searched inside the command paths. Once it is getting that particular command, it is executing as per the definition of that particular command. Okay, so cell has the responsibility to take the input from the user and gives the output to the user by processing the input which is taken by the user, given by the user. Okay, then how to see the current cell? I am just teaching you. So, but don't write the thing whatever I am telling. You just translate that in your language and write in a simple statement. Okay, single statement, simple statement. It is you just write that, guys. Is it okay to you guys? Whatever three assignments I have completed. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. Yes, sir. So how to see the current cell? So current cell, as I told, I am giving this session very elaborately, guys, because I have already completed all the things. Here, how to see the current cell? So current cell दिखने के लिए कमांड क्या पूछते हैं, तो ऐसे आंसर होना चाहिए कि इको डॉलर क्वेश्चन मार्क. Okay, sorry, echo $0. $0 is going to say show you the current cell. How? Why this $0? Now मैं बोला था कि $0 is used to show you the process name. What is the process? If the program is running, once the program is running, at that time you can tell it's a process, and every process can be shown by echo $0, and $1 will show you the first argument to the process, $2 will show you the second argument to the process. As cell is a running program, we can see that cell name using $0. This is one method. Another is like echo $SHELL. Here I want to see, here I am using this cell as a environment variable, and 0 is a special variable. So 0, using the 0, we are able to see only bus. Using the SHELL, we are able to see whole path of that particular pass. The next question may asked by the interviewer that what are the different ways to get the cells? You can tell echo $0 or echo $cell. And sometimes some interviewer will ask how to see all the cells, whatever installed in my system, whatever cells are available in my system. I am using bash cell, it's okay. But what are the different cells present in this particular system? Echo, so it's not echo, cat /etc /shells. This is a file, guys. As and when any cell will be installed in my computer or in my system, this file is going to be populated with the content of that cell name. So here you are able to see all the cell names. But out of the cells, my current cell is bin bash. I can get that using echo $0 or echo $shell. Okay, guys. Next, what is the difference between who am I and who command? I have already told, if multiple users are connected to the system, then if you want to see all the users, then use the who command. So who command is displaying 3 lines, means 3 times I am connected to this system using EC2 user.
If suppose that one of the username is A1, another username is A2, then I am connected as a EC2 user. Then another user will connect A1, another user will connect to the system using A2. So this will show you 3. And currently, what is happening? I am only connected 3 times to this system. That's why it is showing each. Although I am a single user, but I have connected 3 times. That's why it is showing 3 times. So who will show you all the concurrent users which are connected simultaneously to the system? Then who am I? So if somebody is wanting to check using which user ID I have connected, then who am I? Okay, this is the current user, this is the concurrent user. Okay, who is for concurrent user and who am I the current user? Okay, getting it? So let's clear the screen. Now, the next question: what are the different ways we can see about the users? One is who, like all the users I can see. Who am I? This is one method. ID, this is another method. ID is showing you the user ID. This is user ID. Then numeric ID of this user. Then its corresponding group ID. Okay, so on. So these are the 3 things I have told. Another way also in the file concept cat/etc plus group it is /PASSWT. Here you are able to see this A1, EC2 user, A1, A2. Suppose I want to see only the usernames from this. And 5, cart, right? Cart command -D, double quote, colon, minus F1. Guys, you guys may tell, सर हमको तो ये चीज पहले नहीं बताया था, आज क्यों बता रहे? ना मैंने अभी आप लोग को कट कमांड पढ़ा चुका हूं, तो अभी बता सकता हूं. So these are the commands I have already taught you. That's why I can get all these information different ways. Okay. So if you will put the history HIST over Y, then you will get like who command, who am I command, ID command, cat etc password, cot df F1. Okay. So F1. Got it or not? So this is your 6th question. Yes. Sir, last command. Last command I have told you, like in the cat password file. Sir, cat. No, sir. Last LAST. Last. Yes, last command will show you who are the last logged in user. This is difference. It is not showing you the ID. Suppose I will clean this particular thing. You are not going to see. That is going to show you who is the last logged in user. Last time कौन लॉगिन किया है उसको. लास्ट इज ओके बिकॉज अभी आप कनेक्ट किया इसलिए वो दिखेगा. तो इधर देखिए, ये टॉप में दिखा रहा है, आप अभी इसको कनेक्ट किया है. दिस इज ऑल्सो वे you can use this, but you should tell that person properly. But serially, if you will go, first command is who am I, then you will put ID, then who am I, then that cat it is password, then LAST command. It is the lowest priority. Okay, guys, you got it or not? Hello. Yes, sir. देखिए, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी के प्यास बुझा सकते हैं, बट प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए? पहले पानी चाहिए, राइट? It's like this. Yeah. Please, somebody was asking me question. Yes. Sir, W command also used, no? Yes, you guys are now smart enough. Yes, it's very good that you are telling one by one. So yes, W command is also used, but मैं तुमको पढ़ाया नहीं. Yeah, I can use W command also. W. So who and W, they both are giving me the same output, but W is going to show you some more information. Who is going to show you some less information? Right here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 column information, but who is showing you only 3 to 4 column information, 5 column. Okay. Yeah. Thank you guys. Exploring more. Okay. So you can also use that W command. No problem. Perfect.
I like that. Next, why Linux based of OS is better than Windows based OS? मैंने आपको प्रॉपरली बताया, एक पीपीटी में बताया, वो पीपीटी को अगर प्रॉपर रन करोगे वहां पे मिलेगा. Guys, go through that PPT. What the feature of Linux? There you will get why we should choose this Linux based OS better than the Windows based OS. Okay. Then describe the significance of path variable in the Linux. I have already told the same thing in the while discussing the cell. Again, I would like to tell. So path variable contains, it's an environment variable first. It contains all the paths. It contains all the paths of all the commands that you are going to use. If you want to check really all these paths, and all the paths are separated by colon, because they are stored inside a single variable called path. So if you want to break these lines, like all the paths in the next line, then you just put path, then tr, then colon, then double slash. Right? So these are the paths where all of my commands are there. If you go to any of the path, let's say I'm going to this path. Okay. CD. So here, whatever you will see, all will be look like green, right? These are the scripts you guys getting, right? So these are the one commands. Okay. Okay. So path variable has the significance to store the paths of all the commands. As I know when we are executing any command like state or cal, so it is going to check all the paths which is available in the path variable, and if this cal command is present in any of that the paths present in that particular path variable, then that command is going to be executed, or else it will give you the error. This is the significance of path variable here. Then how to see the kernel name and kernel version of Linux system? You see, kernel name, you can check the kernel name by two ways, like echo, sorry, one of the ways. Hello, sir. Yes, just 1 minute. You name, just 1 minute. I'll come to you. You name -n. This is your kernel name. Okay. And host name. Control C. HOSTNAM. So these are the two ways you can see that system name. But in this question, I have told how to see the kernel name. It was showing the system name, actually server name. What is that? Host name. One command, another command is uname -n. Yes. Okay. So uname -s, na? No, अरे मैं क्या बोला? सर्वर नेम जानने के लिए होस्ट नेम uname -n, but kernel name जानने के लिए you are right. Uname -s will show the kernel name. Linux, the kernel is Linux. If you are putting the same command in Unix, it will show you the Unix. So kernel name दिखने के लिए uname -s, server name दिखने के लिए host name, नहीं तो uname -n. Clear? Then I told you how to see the kernel, how to see the kernel name as well as kernel. Sir. Just 1 minute. I am not completed, right? Uname -s. Then if you are putting that just one, what is that version, right? Either V is for version. Okay, so kernel name is showing and version is showing. But normally कोई अगर वर्जन पूछेंगे आप V बता सकते हैं, नहीं तो R बता सकते हैं. देखो R आपको अलग आउटपुट दे रहा है, इट्स ओके. बट नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. कुछ लोग इसको ही वर्जन बोलते हैं, कुछ लोग इसको. एक्चुअली ये होता है राइट वर्जन, बट ये होता है उसका रिलीज वर्जन. तो यू कैन पुट लाइक uname -svr. So uname is show you the kernel name, and it is the ARM release version, and it is your version, actual version of the system. Got it? Yes. Now please ask me question.
What do I ask? सर सिंपल वेरिएबल और इन्वायरमेंट वेरिएबल में डिफरेंस क्या है उसमें? The environment variable जो User होता है। variable you just define, like let's say name equal to, I have you given one name, like echo dollar name. This is my variable. Suppose I didn't define that age. Echo dollar age is not going to show, right? Echo dollar age. It is not going to show anything because I didn't define that. This is my definition. It's called user defined. And the environment variables are already defined. If you put the env command, then it is going to show all the environment variables. One of the environment variable I have told you, path variable. So path variable is a predefined variable, which is needed for the system. Like this, whatever variables are showing in the env command, they are required for the system. As I told, आप जो पैदा होते हैं कुछ भाषा लेके जन्म होते हैं, लाइक रोना और हंसना. ये रोना और हंसना आप पहले सीख के नहीं आया था. That Rona and Hasna is the two environment variable for you. But after that, किसको गुस्सा होना वो आप दूसरे से सीखते हैं, किसको गाली देना दूसरे से सीखते हैं, आंबा मैंगो वो दूसरे से सीखते हैं. हाँ, और एक चीज से सीखते हैं लोग, खाना कैसे, मम्मी से फीडिंग कैसे खाते हैं, राइट. एक नॉर्मल कोई बच्चा पैदा होता है 3 चीज सीख के आता है, रोना हंसना. रोने में क्या है उसको सब मिल जाता है. कौन देता है? माँ देता है उसको. माँ को पता है कि उसका रोने का मतलब क्या है, उसको दूध पिलाना है या उसको खाना खिलाना है या उसको घुमाने लेना है या उसको पट्टी कराना है, समझ रहे. तो रोने का मतलब मम्मी को समझ जाता है. सो दैट वन सिंगल लैंग्वेज दैट पर्सन विल यूज टू एक्सप्रेस हिज वर्ड्स टू हिज मदर. देन हंसना, वो किसी को भी दिखता है हंसता है, बिकॉज दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसको कुछ भी नहीं पता होता. वो दुनिया को एक ही तरीके से दिखता है. उसको लगता है कि मैं अगर किसी का मन में हंस दे दिया तो वो खुद, मतलब एटलीस्ट एक बच्चे को पता है भाई मैं हंसूंगा तो मेरे सामने वाला को अच्छा लगेगा, वो आपको खुशी करने के लिए हंस देता है. तो कभी भी उसको जब कुछ दुख होता है, काटता है, खाना लगता है, पट्टी करना है, वो तब रोता है. बट अलग चीज में वो जब भी आपको दिखे पहले हंसता है. तो ये हंस जो चीज है, जो खुशी है उसके मन में, वो कहाँ से आया? पहले से आया. दुख पहले से आया था. फीडिंग, माँ मतलब मम्मी से खाना दूध पीना क्या है उसको पहले से पता है. So these are the 3 environment variables one person can learn from its born. But after that, बॉल पकड़ना, मतलब कोई भी प्लेइंग बॉल पे पकड़ना, क्या कोई चीजों को पकड़ना, ऐसा कि नॉर्मल फूड खाना या किसी को पैर में लात मारना, ये सब बात धीरे धीरे सीखता है वो चीज. तो जो चीज हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड वेरिएबल. जो चीज पहले हुआ है उसको बोलते हैं इट्स ए एनवायरनमेंट वेरिएबल. क्लियर गाइस? एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम. यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर यू. क्लियर गाइस? Yes sir. Next, how to see there, what is the command to display which kernel you are using. Okay, you can the same name u name minus s. Then command for display dates, today's date in the format of this. So today's date we can tell like this, DAT simply. But in this thing, just see the format 21 //2 ऐसे. तो ये फॉर्मेट अगर मुझे चाहिए तो इसको दिखने के लिए क्या करते हैं ना, डेट प्लस विद इन सिंगल कोट I want to see date first. Date means percentile T, then double slash, then Feb, percentile small b, then slash, sorry, single slash, right? Yeah. Then 2022 year, percentile capital Y. Small y will show you single digit, 2-digit number. Capital will show you 4-digit number. Then hour and minute, then AM. Hour, per hour, it is actually percentile H, then colon, percentile capital M, and space, because here it's a space, and AM, PM ke liye percentile. Small p is for capital AM. You see, exact output I am getting, right? So this is the date command, guys. Okay. So next, how to install a new command, write necessary steps with command. How to install a new command.
So if I want to install any command like tree, suppose, so first you go to sudo su minus then yum space install, then let's say I want to execute install tree command tre and -y. It will install anything without y. It will ask in between. With y, it will not ask. Are you sure or not? So this is one command. If you will press the enter key, then it is going to execute that installation of that tree command. So tree command will be installed. And another way is like this. So don't go to the super user directly. You can do like this: sudo yum install tree -y. This is also if you are a sudo user. If you are a sudo user, then it's possible. Okay. So let's go to the next. What is the command for see last report time of Linux server? So there is two commands. One is who minus b. This will show you when your system was rebooted. Just see February 19. I have done the first class in front of you. So from that day, that particular system is running till now. So booting time is this, or else you can put last, which is showing you this output. Your last line is showing you that who minus b output. So if you want to execute only display only this line only, so just say tel -3. In this output you can put tel -3, right? Last, then tel -3. Okay, it is showing you this way, right? Then head minus head -1. So it is telling this. This is one command, and or else directly who minus b. But the output format will be different. This is in longer format. This is in single format. So subtle format. Okay. So 19, 18, 52, 19, 52. Okay. So this is covered. Then how to see the last 5 login information? Simple last, but last 5. So it is going in the top, right? So if you are able to see, if you want to see, then only 5 like this 5. So here, right? Simple. last, then head -5. Got it? Then last answer for this session. No, not for this session. With the first assignment, I will cover the second assignment also. How to create a hidden file in a Linux. So for creating the hidden file, simply for creating the normal kya hota hai? Touch, right? touch. Let's say x1. It will be created, but that x1 is going to show you. But if you want to show, if you don't want to show that x1, then what to do? touch dot x2. x1 is already created. That's why I want to create to another name dot x2. If you are putting this way, then just see that x2 is not shown here. But if you want to see that x2, then ls -a करो. यहाँ पे देखिए आपका x2 is shown. यहाँ पे x2 दिख रहा है. So ls -a is going to show you the files, all the files along with the hidden files. But this how to create that? So this way. If you want to create a blank directory, then directory create करने का command है mkdir. Then directory name, let's say directory name is like .pqr. So that will not shown to you here. But ls -ltra करो, दिखेगा ये, right? So a लगाना पड़ेगा, ठीक है, to see the hidden files. Guys, this was all about the first assignment. Sir, Yes. लास्ट 5 लॉगिन इंफॉर्मेशन शो करने के लिए लास्ट -n5 भी कमांड यूज कर सकते हैं ना? Yes. last -n5. But here दिख रहा है ना, ये 5 आएगा ना, आता है, मतलब don't worry. last, अच्छा ये पहला कमांड, ये पहला अभी का है, ये भी यूज कर सकते हैं. नहीं तो
LAST. There are many ways, guys. So head minus 5 also. Same. Not here now. These are displaying the same amount. Let's move to the next session, guys. I am keeping the same video. In the same video, 2 assignments I am recording. So go to the next assignment. Guys, those which are missing this class, no worry. I will definitely share this recording. So go through the video and check that. Check your output against my output. How to replace all words mango with arrange from line number 5 to line number 20 in a file. So mango and orange, okay. So let's. अरे क्या यार तुम लोग क्यों बार बार कनेक्ट कर रहे हैं? कोई चला जाते हैं तो अभी देखो 92 हो गए. क्या हम लोग गलत पढ़ा रहे हैं? तुम लोग 100 से 92 चले गए? नहीं सर. अभी देखो लोग 92 चले गए. लोग पीपल आर नॉट सीरियस. सर आपने कहा ना कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे तो जा रहे. इसलिए लोग उसका फायदा उठाते हैं. मुझे पता है. बट ये जो लोग इस टाइप का कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं, they will be the गधा नंबर 1. बोलता हूँ कभी भी सक्सेस नहीं होगा. ओके मैं बोलता हूँ ये चीज मैं दिखाऊं. अरे तुमको मैंने गाली नहीं दे रहा हूँ. मैं बोलता हूँ जो बंदा ऐसा कंफर्ट जोन ढूंढता है, अगर चांस मिला है, देखो तुम अभी क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, जो लोग अभी चला जा रहे हैं वो क्वेश्चन पूछ पाएंगे क्या? उसका डाउट भी रह जाएगा. That's why always try to be the first comer. So those which are coming first, they are joining as a 100 joining. So from the beginning 92 were joined. Now because of another 8% left and some people are joining newly, I am going to add them again and again. So I am being disturbed. So tomorrow onwards, guys, I am telling those which are already present, if you want to be in this session, come within 5 minutes, because I know everybody will come tomorrow, and within 5 minutes the seats are going to be filled up. So please join by 9:05 only, or else I am not going to admit you guys, even if it is asking me for admit. If somebody not joining before 9:05, then I am not going to admit them. Okay, so let's start, because I am being disturbed again and again. I don't want to do this. Next is like, as I told here, I want to create one file, vi, let's say, fruits FRUI, fruits.txt. Oh my God, vi FRUIT.txt. So here I am telling, mango is a good fruit. I want to create this file. I have in our farm, there are 5 mango trees. Every year, some monkeys are coming to my farm to eat the mangoes, because let it do that capital mango, MANGO, because our MANGOES are very tasty. Here I have given 2 mangoes. One is in capital and a small, and here one capital mango, here one capital mango. I also like to eat mangoes very much. So these are the 4 lines I have added. See, cat
fruit.txt. I want to replace all the mangoes from, it is asking me from 5 line to 20 line, but every line contains mango. I want to change only these two. Whatever present in these 2 lines, I want to change this mango into orange. Okay. What to do? SCD. It is not asking anything, like it is not telling VI or anything. I can use SCD, single quote, S/MANGO/ let's say orange, ORANGE. Then it is going to change that orange, mango to orange. All जगह में कर दिया ना? Okay, I didn't give the file name. File name is fruit.txt. So it is going to change all the mango, right? In the orange, here orange, here orange, but here it is mango because it is small. It's small actually, so it is not able to do that. Again, it is a second occurrence. That's why I have to put a G. But here it is not able to do that mangoes because I have given MANGOES. I have given a small mango here. That's right. So what to do? If you want to do all occurrence like S, you will put G here. Then it is going to do all. But because of this case sensitivity, it is not able to do this. Okay, so what to do for case sensitivity? Put a I here, GI, and it is going to do all right. देखो ये हर जगह में अरेंज को मैंगो को अरेंज कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया. Then I have told you only these 2 lines. So here put a 2, 3. So like 2, 3, you will give it as per the question. It is 520. So you will put 520. So in this particular output, I am showing you second column and third column 2, 3. Okay. So it is only doing the changes of this. It is not changing this line, not changing this line. You only changing this line. So for your case, you will give a 5, 20. 5 लाइन से लेके 20 लाइन तक ये क्या करेगा? एडिट कर देगा. ठीक है? So what you guys are telling me to admit, right? Admit all, okay? Now, Sir. Yes. Sir, just like we have a W command in grep, so do we have any such command in SCD? Just No. like, you know, if you will check in your in your file, you written oranges, but when the word mango is replaced, it is also replacing the orange, the first part of oranges. So the spelling is, you know, getting wrong. Mango is it's becoming like, so that's why. Yeah. There is no other option but this way you can do. Okay. Give a space here. Okay. Here it is putting put that delete that 5, 20. So here it is doing that mangoes tha. Just see first. Cat fruit. A mango, right? I am just checking. Mango space orange, right? So only this is going to be changed. Mango space and orange space. You will put a space also there. Mango space, orange space. It will change this, but it will not place this. It will not place this. It will also not place this. Right. But it is not orange. Yes, sir. Orange. Hello, sir. Yeah, that's what I was asking. Thank you. Yeah, no problem. Sir, can I access the VI file in nano command, and then we can change all the mango words with the orange? Why you are going to the nano command? Nano, Yes. I am not teaching nano. Nano is Okay, out. sir. VI is the only command. VI. क्या बोलना चाहते हैं आप बताओ अभी? Can I use access the VI file with the nano command and change the mango word? क्या करूँगा बताओ? Change the mango to the orange. Here, right? In nano file, sir. In nano files. In nano command, yes, sir. No, I don't know nano command again.
Okay. Nano is editor. I know. Okay, okay. No, I know, but I didn't teach you, right? So don't worry about that. Okay, sir. Nano is a command. Okay. Nano, Yes, let's sir. say that put fruit.txt. It will open that. Or nano command not there. Okay, no problem. Sudo minus sudo yum install nano, then minus y. It is installing that. Okay. So nano, then file name is fruit.txt. So here you want to edit that, right? Just go to that. Let's say I want to change this mango into orange. So here the instructions are given, right? नीचे देखो. अभी इसको काटने का. Help command लिखने help mode disabled. Enter हमारा अभी देखो. Sorry, escape view. So for that help mode, I can again I want to connect it. Just 1 minute. So put a X here. Escape. It is देखो गया. यहाँ पे जो दिखा था ना उसको तुमको याद रखना पड़ेगा. ये नैनो कमांड का तुमको कुछ याद रखना जरूरत नहीं है. मैं सिंपली इसको बाहर आने के लिए शायद W या कुछ दबाते हैं. नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो चुका है अभी. यस, स्मूथ स्क्रॉलिंग enabled. Okay. Control Z, sir. Control Z, Control C, Control D. No, not Control X. Okay. Control X, sir. Control X. X, then Control C. Answering will be discard changes. So ये नैनो को कमांड को थोड़ा यूज करने से पहले वो जो इंस्ट्रक्शन देता है नीचे ना उसको पढ़ लो. Okay, sir. Sir, my doubt is that if in VI we change all the word with the help of the percentages. नैनो कमांड पे भी कर सकते हैं, बट मैं क्या Yes, yes. बोला ठीक से नीचे जो इंस्ट्रक्शन लिखा होता है उसको पढ़ो. मेरा Yes, भी yes, याद yes. नहीं रहता है तो मैंने इसलिए गड़बड़ किया. दैट्स व्हाई अभी मेरे को पूरा बंद करना पड़ेगा. बाहर नहीं आ पा रहा हूँ तो क्या करेंगे, अगेन कमांड कनेक्ट करेंगे तो जाएंगे इधर. Okay, so here Control plus, then you are telling nano command, right? Just go to that vi fruit. ऐसा नहीं करके क्या करें, नैनो करो. नैनो fr. देखो डिफिकल्ट चीज को पढ़ना नहीं. ओके, पहले वो तो पहले डिफिकल्ट है. हम लोग vi पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर जाना. नॉट कोई नहीं क्वेश्चन पूछेगा क्यों तुम नैनो पढ़ा है vi नहीं पढ़ा. ओके, मुझे Okay, sir. तो अभी देखिए यहाँ पे राइट करने के लिए बोल रहा है. राइट आउट, रीड फाइल, एग्जिट करने के लिए तुम जाके चेंज करो. तो मैंगो को चेंज करो जाके, बैक स्पेस लगा के शायद चेंज होता है. चेंज हुआ ना. मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिखा ORANG. ठीक से अभी देखो वो बोल रहा है एग्जिट करने के लिए कंट्रोल X. सेव करने के लिए कुछ ना कुछ रहेगा. अगर सेव करने के लिए नहीं है तो W पर राइट. तो यहाँ पे देखो कैप O करता है, कैप W. ये कैप W मतलब कंट्रोल O करो. कंट्रोल O, it will be actually saved. सेव करता है ये. कंट्रोल X करो और बाहर आता है. यस और नो पूछेगा. अभी Y दबा दो, हो गया. सो कंट्रोल X करने में आपको कंट्रोल Z, गेट हेल्प, कंट्रोल G, then control X, control G will take to you this, control W, then कुछ भी सर्च कर सकते हैं ऐसा. कंट्रोल X, अभी कंट्रोल C करो कैंसिल के लिए. I want to go out, control X. In my Mac it is not working. So then control S. It should ask you Sir, why you are there. Control capital X, sir. I am doing that only. Control X only. Control C is working. Nothing is working. Now it is telling yes or no. So press no. Okay. It is going outside.
So don't use this type of difficult things. Okay, you know nano editor, you just tell no, yes, but I am not using that. Nano is a editor, but vi is a editor which is giving you the flexibility. We have learned vi. Next, how to delete 5 words in backward direction. मतलब ये आपको vi के बारे में पूछ रहा है. तो vi fruits जाओ .txt, आपके कहीं पे भी जाओ इधर. Let's say I want to delete the words from is coming, like suppose I am at word mine, so I want to delete this. क्या करेंगे? पहले 5 D5B. W ऐसे कर सकते हैं. सर क्या करेंगे? 5 W मतलब आगे, आप पीछे मतलब बैक. क्या करेंगे? D5B. यस, B इंसर्ट हो गया. टाइप हो गया क्योंकि मैंने इंसर्ट मोड में था इसलिए. तो क्या करेंगे? एस्केप D5B. It will remove 5 words before the cursor. Okay. Next, how to copy 5 lines from current cursor position. अभी देखिए यहाँ पे 2-3 लाइन कर दो ऐसा. Let's say ABCD. Sorry, 1 ABCD. अरे जा नीचे भाई. ABCD. Hello, Ramesh. My cursor is at here, so I want to delete the lines 5 lines. 1 2 3 4 5. तो क्या करेंगे? D. देखो डायरेक्टली 5DD भी कर सकते हैं. यहाँ पे 5DD कर दिया तो रिमूव हो गया. दिस इज शॉर्टकट. बट अगर आप 5 करना चाहते हैं अलग वे में, तो नीचे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? J करते हैं, राइट? 5 सर D5J ये भी रिमूव करता है. बट if you are using this option, if you want to delete 5, then D4J करो. 1 2 3 4 5. ये हेलो तक डिलीट करना चाहता, राइट? 1 2 3 4 5. मैंने क्या लिखूंगा? D4J. Okay, or else 5DD. These are the 2 methods. What command you will use for removing unnecessary blank lines from a file? सर वो कॉपी था 5YY. कॉपी था, वही कॉपी कट जो भी कॉपी करके पेस्ट करो, कट करके पेस्ट करो. जो मैंने कट का बताया डीडी, आप कॉपी के लिए वही करने का. तो मैंने लेट्स से कॉपी करना चाहता हूँ 5 लाइन और 4 लाइन. लेट्स से मेरा कर्सर इधर है, सो 4 लाइन साइड 4Y वही बस कॉपी हो गया. कहीं पे ले लो, पेस्ट कर दो, पेस्ट होता है, राइट? So these are the many methods I have told you. Cut, copy, paste, already told. What is the command you will use for removing unnecessary blank lines? So let's say I have the data file like this. यहाँ पे let's say single line और यहाँ पे फिर multiple lines blank line. तो single line तो ठीक है, हमको पता चलता है कि single line पर blank line, but multiple हाँ मैडम बोलिए. क्या कर सकता हूँ मैम? 3-4 हजार रुपया मंथली मांगता है. तो वीडियो मेरा पेड है बट 100 है. मेरा मतलब पेड है 100 है, इसलिए तो अनलिमिटेड टाइम तक मैं पढ़ा पा रहा हूँ. बट पेड है जो 100 के लिए लिया, उसके लिए 1400 रुपया भरना पड़ता है. अगर मैंने 4,000 भरूंगा तो मेरे को 300 के लिए मिलेगा. ये इतना कौन अफोर्ड करेगा? नहीं, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लोग देख लेंगे. Yeah, definitely I'm going to give the video. Yes, please. Yeah, no problem. Thank you. Okay. So यहाँ पे guys, I had a call institute से, no worries. So this is going to be given to you. Okay. Now these are the 2. भाई कौन है बताता है भाई? म्यूट हो जाओ पहले, उसके बाद किसको जानते हो, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे देखिए, नो ब्लैंक लाइन और मल्टीपल ब्लैंक लाइन, यहाँ पे सिंगल ब्लैंक लाइन, यहाँ पे मल्टीपल ब्लैंक लाइन. तो ये बोल रहा है कि अननेसेसरी ब्लैंक लाइन. देखो यहाँ पे नेसेसरी ब्लैंक लाइन भी है. कैट, अभी मेरे पास फ्रूट. यहाँ पे नेसेसरी ब्लैंक लाइन भी है,
ये नेसेसरी ब्लैंक लाइन, बिकॉज सिंगल लाइन तो चाहिए कोई अगर कोई चाहता है, बट यहाँ पे मल्टीपल ब्लैंक लाइन, इसको बोलते हैं अननेसेसरी ब्लैंक लाइन। तो ये सबको हटा के एक ही रखेगा। इसके लिए क्या करने का, कैट माइनस क्या है, एस, राइट, एस yes, I have put that as, right, cat minus s, then it is doing that, it is removing all the black lines. What is the command to display line number only for the lines which contains data? Set nu. क्या कमांड है? Set nu. cat minus n, क्या भाई बहुत अच्छा पढ़ा है। cat minus b. Yes, so it is Cat counting minus b. all the, it is counting all the lines, even if blank lines, but I The want cat to, minus b. yeah, cat minus b, thank you, cat minus b, then fruit dot text. It is only counting the non-blank lines. Okay, then ये हो गया 5 नंबर, हो गया 6 नंबर। How to see the tabs present inside a file? Anybody? Cat minus t, sir. Cat minus t. Thank you. So अभी मैंने cat minus minus t. capital T. स्मॉल टी करो तो कैपिटल चलेगा, बट मैंने अभी टी बताया, अभी फ्रूट FRUI। अभी मेरा डेटा में कुछ पे कहीं पे भी टैब नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा है, बट दिखने के लिए थोड़ा टैब डालो कहीं पे, VI FRUIT डॉट TXT। कैप माइनस BET। अरे BET क्यों चलाएंगे, ET में काम होगा, BE क्यों चलाएंगे? अभी देखिए यहाँ पे मैं टैब दे रहा हूँ, डबल टैब दिया, तो एक जगह में डबल टैब दिया, यहाँ पे सिंगल टैब, और यहाँ पे एक ही टैब। तो कैट माइनस टी में हो जाएगा, हम लोग BET क्यों देंगे, E फॉर एंड, T फॉर टैब। हेलो यस सर, VI एडिटर में भी कर सकते हैं नाम। यस, VI एडिटर जाएंगे, सेट लिस्ट करके कर सकते हैं, सेट लिस्ट करके VI एडिटर जाओ, फिर उधर देखो, फिर बाहर आओ, क्यों करेंगे सर? इट इज शॉर्टकट, राइट? ये दिया, यहाँ पे देखो ये 2 टैब से, so 1 tab will show as a cap I. Got it now? Next, how to see tabs here? What is the variable and write the benefit of having variable? इस चीज को मैं 50 बार बोल चुका हूँ, कम से कम 10 बार बोला हूँ। वेरिएबल कैसे यूज करते हैं कि रीयूजेबिलिटी के लिए मैं बार बार अगर एक फाइल के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू को डाल रहा हूँ, उसको ऊपर वेरिएबल कैसे डिफाइन कर दो। जस्ट 1 मिनट, वन कॉल कर। हेलो, या ओके, सो इट्स actually it is a girlfriend call. So one of my girlfriend is in HDFC bank, so she was calling. So again, daily basis I am getting the girlfriend calls from HDFC, ICICI, okay. So no worry, I stopped that. So what is the variable and write the benefit? I told ना, variable अगर पहले define कर देते ताकि उसको value को बार बार change करना पड़ता है, but if it's a variable, so variable पे use कर दो as a reference. So ऊपर अगर वेरिएबल में कुछ भी चेंज होता है, बार बार जाके अंदर चेंज हो जाता है, हम लोग को बार बार चेंज करना नहीं पड़ता है। So ये मैंने वेरिएबल दिखाया था, अभी तुमको दिखाना जरूरी सोच रहा हूँ या नहीं? चलो सोच दिखा लेता हूँ, ओके दिखा लेता हूँ। मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया VI, लेट्स से my script script.sh, और वहां पे मैंने ऐसा दिया /bin/bash, then let's say my name is G, let's say name is Mango, MANGO, तो मैंने बार बार इसको यूज करूंगा। ओके, सो लेट्स से Mango is a NGO, Mango is a, इसको नहीं लिख के पहले बताता हूँ। Mango is a fruit, I like mango, monkey like mango, he likes mangoes, he likes mango, she like mango, then बोलो भाई क्या है? Eat like mango, अरे क्या है भाई बताओ, पढ़े ना? Likes mango. Yes, Like mango. you like mango. अच्छा मैंगो। नहीं, you like they mango. like mango. Yes, we like likes mango. We like mango. Yes, then I like mango. Like mango. हाँ लिखा है already. He likes mango. It I likes नहीं, I like.
दे लाइक मैंगो, क्या ग्रामर? He is mango. यस, We like mangoes आएगा ना? My favorite mango is He likes आएगा. कौन लाइक, क्या आएगा? ही, शी लाइक्स, यस यस, He likes, it likes. It likes. राइट, यस. So he likes, she likes, it likes, you like, we like, they like, then I like. She likes. कहाँ पे likes आएगा? सर ये ग्रामर क्यों कर Grammar error. Grammar error, sir. ग्रामर क्यों पढ़ा रहे? राइट, बता रहे, कौन बता रहा है? वो शी के बाद लाइक्स की स्पेलिंग चुकी है. हाँ, she की likes. ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हैं? गाइस, ग्रामर रनिंग, ग्रामर हर जगह में आएगा, नहीं तो जॉब नहीं करेगा. भाई सुनिए सुनिए सुनिए, अरे भाई म्यूट हो जाओ. कौन है म्यूट नहीं हो रहा है? चलिए म्यूट कर दिया. अभी देखो ये लाइन से, ओके. बट मेरे को अगर कल मैंगो जाके चेंज करना पड़ा, मतलब मैनुअली करूंगा मैं, लाइक से पर्सनल एस यूज नहीं करूंगा मैं. कितने जगह में करूंगा? हर जगह में जाके कैसे करूंगा? राइट, मैंगो को एक्स 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 काटेंगे, उसके बाद एम ए एन जी, सॉरी ओ आर ए एन जी, कितने जगह में करूंगा? 8-10 जगह में करूंगा. तो इतने से जगह में करने से अच्छा क्या करने का कि एक वेरिएबल लगा दो यहाँ पे, एस्केप कोलन परसेंट, सॉरी वेरिएबल क्या करेंगे? वन इज फ्रूट FRUIT इक्वल टू मैंगो. कोई पूछा था सर ग्रामर क्यों पढ़ाएंगे? भाई ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है. अभी यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ यूज करने के लिए सर मैंगो की स्पेलिंग गलत हो गई, इट लाइक्स मैंगो. छोड़ो यार उसको. ओ That's स्पेलिंग, what I am saying. भावना को समझो भाई. मैंगो स्लैश FRUIT, अभी हर जगह में फ्रूट हो गया, यहाँ पे भी हो गया. चलिए किस काट देते हैं क्या? कहाँ पे गलत हुआ था? इधर मैंगो, राइट. ओके गॉट इट. इसको लाइन उड़ा है ना सामने. चलिए अभी देखिए क्या हो गया कि मेरे को अगर कल मेरे को मैंगो के जगह में ऑरेंज करना पड़ रहा है, तो यहीं पे कल चेंज करो, बिकॉज ये सारी जगह में ऑटोमेटिकली मैंने वेरिएबल यूज किया फ्रूट, इसलिए ये ऑरेंज हर जगह में ऑरेंज हो जाएगा. दिखता है अभी CHMOD U plus X माइन स्क्रिप्ट प्लस माइन स्क्रिप्ट. ओ माय गॉड, क्या हो गया? इको नहीं दिया. ओके, ACHO. कल मुझे अगर ऑरेंज को चेंज करना पड़ा मैंगो में, देखिए एक जगह में चेंज किया, MANGO, हर जगह चेंज होता है. इज द बेनिफिट ऑफ वेरिएबल. एंड मैंने वेरिएबल को यहाँ पे यूज किया, लूपिंग में यूज किया. लूपिंग में चेंजर के हिसाब से लूप दैट वेरिएबल यूज हो रहा है. सो आपका लूपिंग पॉसिबल होता है केवल वेरिएबल के लिए. ओके, देयर आर टू थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, बट ये दो बता दिया था काफी है. देन the command to display the line number, ये हो गया ना. how to tab हो गया. what is the 7 by 8 is like, अरे लोग अभी 85 हो गए. वाओ, वेरी गुड. मैंने मैडम को ये नंबर बताऊंगा. और गाइस कल मैंने सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए. कल मैंने सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ मैडम का. सब्सक्रिप्शन वाला ये मैं पढ़ाऊंगा. जो लोग पहला, भाई सुनिए सब लोग, जो लोग पहला 5 मिनट में ज्वाइन नहीं करेंगे मैं उनको ज्वाइन नहीं करूंगा. कल का वीडियो में नहीं देने वाला, बिकॉज मैंने मैडम का फुल सब्सक्रिप्शन वाला यूज करूंगा. 300 लोग का, उनका शायद 400 या 500 लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसमें. मैं उसको अगर कल ज्वाइन किया, उसमें पहला 5 मिनट जो लोग ज्वाइन नहीं किया, मैं उसको गाइस बिलीव में उसको अलाउ नहीं करने वाला हूँ, वीडियो भी नहीं देने वाला. ठीक है गाइस, एवरीबॉडी टेलिंग यस और नो? यस सर. Yes, yes. yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. हो गया. yes sir. yes sir. Yes sir. अभी Yes चला. sir. हाँ, एक बंदा 2 बार भी यस सर बोल रहा है. चलिए Sir, question number. मैं क्वेश्चन नंबर 9 जा रहा हूँ.
how to see all the environment variable. 8 env command is going to show you all the environment variable. Then 9, suppose I have word mango. What command I will use to generate the output as क्या करेंगे? REV. Yes. R use करेंगे. REV. So mango, it is displaying this. Then rev. Okay. उल्टा आपके सामने है कि ये rev को लगा के अभी एक प्रोग्राम करता हूँ कि how to check whether that word is a palindrome or not. VIPALLINDROME.sh. So let's do that. /bin/bash. Let's say read -p. नहीं तो ऐसा स्क्रिप्ट को दे देते हैं कि चलो ऐसा लिखेंगे कि WRD word equal to $1. Then I am putting like echo $word WRD. Then read. And I want to store that thing into a variable. क्या करेंगे? बैकटिक देके उसको वेरिएबल लिख देंगे. लेट्स से ऑपोजिट OPPO SIT इक्वल टू. ओके, ऑपोजिट तो नहीं है बट ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्स. रिवर्स REVRS रिवर्स. ओके, तो बोल दिया. अभी यहाँ पे चेक करूंगा if. if क्या करेंगे? $word WRD राइट. डबल इक्वल टू ऐसा दूं या -L दूं? -EQ दूं? क्या दूं? डबल इक्वल टू, बिकॉज़ इट्स अ स्ट्रिंग राइट. डबल रिवर्स REVERSE. then square bracket, but it's a string, that's why you have to put a double quote here. इसके यहाँ पे don't put single quote. then echo $word is palindrome. Is not palindrome. CHMODU plus X palindrome. Sir, what is mean by palindrome? दिखाओ ना, अभी दिखाता हूँ. अभी मैंने ऐसा लिख दिया कि ABC. क्या बोल रहा है? Not palindrome. बट मैंने ऐसा लिखा MADAM. ये क्या बोला? इससे palindrome बताओ. अभी आप बताओ. जो पूछा था आप ही बताओ. इसको The word can write from any direction. It is same. Then it is called palindrome. Yes. The word and its reverse word is not same. Then it's not palindrome. इस मैडम का रिवर्स क्या होता है? मैडम होता है, इसलिए palindrome. ठीक है ना? कटक के कटक palindrome. But CUTTACK not palindrome. Sorry. हिंदी में कटक हो जाएगा palindrome. इंग्लिश में नहीं होगा. कड़क. यस, कड़क. कोटक नहीं होगा. KOTAK हो जाता है. ठीक है, गॉट इट. लाडला. हाँ, अभी देखो 1 2 3 4 3 2 1. इससे palindrome. बट यहाँ पे अगर कुछ भी लगा दिया नॉट palindrome. ठीक है, गॉट इट. सो यूजिंग द rev it's helping. Can we apply touch command on existing directory in Linux? Yes or no? Can we do? Yes. If yes, then what happens with the directory after applying the touch command? It changes the timestamp. Yes, guys, you guys are reading now. Touch command used to change the timestamp of folder and files if the object is exist. If it not exist, then it is going to create a file. -B. -D use करो जो करो. How to remove a directory having its subdirectory and files? क्या करेंगे? RM minus directory name. Yes, directory name. ठीक है, तो ये हो जाएगा. उसके बाद Sir, we can also use RM minus RF. F क्यों चाहिए? R में हो जाता था, F क्यों चाहिए? समझ रहे ना? तुम किसी को गाली देने में अगर तुमको पैसा दे देता है, तुम उसको पीटना क्या जरूरत है भाई? समझ रहे? RM minus RV. कुछ भी जरूरत नहीं है. भी तो भरवस के लिए.
मैंने बताया भी यूज कर सकते हैं, बट भी वर्बस के लिए भी इधर एग्जैक्ट आंसर नहीं है। आर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। भी एफ जो जोड़ना है जोड़ो, बट आर बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ रहा नहीं? आप बोलोगे यार सर मैंने मंदिर जा रहा हूँ शादी करने के लिए, मंदिर जाने के लिए शादी करने के लिए आपका आप और आपका वाइफ चाहिए। आप बोले सर मैं और मेरा वाइफ और मेरा फादर जाएंगे, चलेगा क्या? हाँ जाएगा, तुम दोनों बहुत जरूरी है, तुम्हारा फादर जाएगा नहीं जाएगा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ऐसे होता है, क्लियर है? सो देन we can use star command to decrease the size of a file. True or false? False. False, हेलो sir. सर, False. Yeah, tell me. RMDR कमांड यूज करके भी हम डिलीट नहीं कर सकते क्या? ब्लैंक डायरेक्टरी करते हैं, बट ये क्या बोला? इट सेज सब डायरेक्टरी उसके अंदर सब डायरेक्टरी फाइल है, इसलिए वो मिलेगा। RMDR कमांड में ओनली ब्लैंक डायरेक्टरी रिमूव होता है। ब्लैंक डायरेक्टरी को यूज करते हैं करने के लिए। 12 नंबर ट्रू और फॉल्स? कोई बोलेगा False. False, false, sir. anybody only telling create true? packages. Yeah, It is used for creating package of directory. yeah, it is only for the creating the packaging package. Then after creating the package you can make it small by zip command. Then in which In tar command the file size will double हो जाती है सर। 1000 गुना भी हो जाएगा, डबल नहीं होगा, 1000 गुना होगा। एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर डायरेक्टरी के अंदर फाइल रखते हैं, डायरेक्टरी को देखते हैं तो डायरेक्टरी दिखते ना, वो दिखाएगा ऐसा। छोटा फाइल मत, कभी टार करते ना बड़ा, एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल डाल दो, फिर फोल्डर को टार करो। फोल्डर को टार करने में फोल्डर का साइज दिखाएगा बड़ा, क्योंकि फोल्डर का अंदर का कंटेंट का साइज दिखाता है। बट खाली फोल्डर का, देखो मैं बोला था ना, फोल्डर का साइज ls कमांड में धोखा देगा आपको, इसलिए फोल्डर का साइज कैसे दिखते नहीं। फोल्डर को पहले स्टार कर दो, उसके अंदर जितनी सारी फाइल्स है सबका फाइल को समेशन मिला के दिखाएगा। Sir, question number 2, how to delete 5 words in backward direction? Which command, sir? मैं already told, so please you are just started. Yes sir, 100 plus people वीडियो देखिए। कल से 5 मिनट के अंदर अगर ज्वाइन नहीं करोगे आपको कोई अलाउ नहीं करेगा। तो इसी वीडियो को मैंने अपलोड करूंगा, पर कल का वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। सो आज का वीडियो देखो, आज के लिए आज का वीडियो देखो जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाया। हाँ सर, 9 बजे ज्वाइन कर रहा था, मगर वो 100 प्लस हो रही नहीं थी ना। अरे भैया सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग आप 9 बजे ज्वाइन नहीं किए, जो लोग 9 बजे ज्वाइन किए, वो मैंने उसको एक्सेप्ट किया हूँ। गेटिंग मी? ओके सर। हाँ, 9-10 बजे तक भी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे। 9-10 के अंदर थे 85 लोग, 90 लोग, 100 लोग थे। हाँ सर, मशीन टेस्ट चालू थे अभी उधर। हाँ वो बोलो ना, फिर मैं वही बोला, वो मैं आपका गलती नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम 100 लोग का एक्सेप्टेंस होता है। तो कल मैंने बड़ा वाला लूंगा जिसमें 400 लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 500 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बट बड़े वाला लूंगा मैं। कल का वीडियो को रिकॉर्डिंग नहीं करने वाला हूँ और नहीं देने वाला हूँ। कल आपको 9-5 के अंदर ज्वाइन करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। ओके सर। और आज जो है मैंने वीडियो दूंगा, बिकॉज ये छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, 1000 रुपया का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक इन व्हिच सिनेरियो MD5 कमांड इज हेल्पफुल। कोई बताएगा? Sir, if we copy one file, wrong. Copy नहीं करता है, copy नहीं करता। दूसरा डाउनलोडिंग द फाइल। No, sir. It URL for downloading file. unique number. It generates one checksum number. Yes. बहुत लोग गलत बोले, सुना बहुत लोग गलत बोले। वो लेडीज को बोला, सही बोला। To generate one checksum number, sir. Yes, this is the answer actually. Of 32 digits, sir. 32 digit character alphanumeric. I am telling. भाई सब लोग म्यूट हो जाओ प्लीज। डाटा वेरीफाई कर। हाँ हो गया बहुत। मैं अभी किसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, तो सब लोग बोलोगे तो कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूँ। MD5 सम कब लगता है? जब हम लोग कोई भी फाइल को कहीं पे भेजना होता है, पहले उसका MD5 सम निकालो। MD5 सम कमांड इज यूज्ड टू हैव अ चेकसम। ओके, तो व्हाट इज दैट कमांड? सो MD5 sum and then any my script. Okay, just it is putting a MD5 sum my script. So it is just giving one number. सपोज ये पर्टिकुलर फाइल को मैंने कहीं पे भेजा और वहां पे अगर करप्ट हो जाता है, मैंने ये नंबर के द्वारा
उसका वहां पे नंबर जनरेट करके दो नंबर को चेक करूंगा, अगर दोनों अलग अलग आया तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई फाइल में चेंजेस किया है। सो दिस इज द रीजन। ये ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में MD5 सम लगाए तो मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं आता है, और टेक केयर कर लेता है। ठीक है सर अगर फाइल में थोड़ा चेंज हुआ तो नंबर भी चेंज होगा? यस, फाइल में थोड़ा चेंज हो, देखते हैं अभी फाइल में चेंज करते हैं। vi लेट्स से माई स्क्रिप्ट। बाद में जो लोग ज्वाइन किए थोड़ा अच्छा बंदे लगा, मुझे लग रहा है। अभी देखो टी को मैंने कैपिटल आई कर दिया, बाद मतलब आज नहीं, जो लोग मेरा लाइनस का 7th क्लास 8th क्लास में ज्वाइन किए वो लोग थोड़ा लग रहा है। तो देखिए अभी इसका नंबर पर चेंज हो गया ना, थोड़ा चेंज किया। ठीक है, ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट, what are the difference between cp command and mb command? Cp command is going to just copy the content of file, like दो कॉपी बनाएगा। और mb कमांड में क्या होता है, उसी फाइल का नाम अलग हो जाता है, रिनेम हो जाता है, मूव हो जाता है, एक ही कॉपी रहता है। और सीपी कमांड में दोनों का आइनोड नंबर समान नहीं रहेगा, मतलब असमान रहता है, मतलब अलग अलग रहता है। बट एमबी कमांड में आइनोड नंबर प्रीवियस कमांड का, प्रीवियस फाइल का आइनोड नंबर नया फाइल को अलोकेट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सीपी एंड एमबी में डिफरेंस। नेक्स्ट, हाउ टू सी द फाइल नेम एंड दैट द करेस्पॉन्डिंग आइनोड नंबर along with size of all the files in appropriate unit such as, ये बड़ा कमांड नहीं है, ये दिख रहा है बड़ा। सो हम लोग जब ls-ltr करते हैं यहाँ पे ऐसा दिखता है, बट मेरे को चाहिए फर्स्ट कॉलम, मतलब आइनोड नंबर कहाँ था, आई कर दीजिए, यहाँ पे ls-ltr आई कर दीजिए। तो ये क्या करता है, आइनोड नंबर दिखाता है। मुझे क्या चाहिए, साइज, राइट। मुझे भाई चाहिए नेम चाहिए, पहले आइनोड नंबर, उसके बाद नेम, फाइल का नाम, उसके बाद साइज चाहिए। सो मैंने इसको दो वे में कर सकता हूँ। पहले मैंने कर देता हूँ AW के लगा के, AW के यहाँ पे कोई ये नहीं चाहिए, बिकॉज FS OFS नहीं चाहिए, बिकॉज ऑटोमेटिकली ये टैब एंड स्पेस को डेलिमिटर सोच लेता है। मल्टीपल स्पेस भी है, उसको मैनेज कर लेता है। यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा प्रिंट print ls-ltr-hi कर दीजिए, बिकॉज ह्यूमन रीडेबल कमांड में चाहिए रहेगा। सो $1 और डॉलर नेम कर दो, पहले $1 कर दो। It will show you the first column. $5 $5 कर दो साइज के लिए, ओके। साइज $6 करो, बिकॉज 6 से साइज आ गया। उसके बाद कमांड $10 करने में, $10 नहीं है क्या, परसेंटेज कर दिया, सॉरी। ऐसा है ये, दिस इज वन वे। नेक्स्ट वे इज लाइक कॉट कमांड में कर सकते हैं, बट कॉट कमांड के लिए TR लगेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा उसको। सो TR-S ऑल सिंगल स्पेस को स्विच कर दो, उसके बाद कॉट -T डबल कोट में स्पेस -F1, (6,10). अरे क्या दे दिया, ये नहीं आया क्या, ये TR-S सिंगल स्पेस को पेस्ट किया। ओके, एक एक करते हैं, चलिए क्या होता है देखते हैं। ओह माय गॉड, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। 2 अभी बताता हूँ क्या हो गया। 2 करो, 7 करो, 11 करो, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि ये TR कमांड का जो देता है, यहाँ पे पहले स्पेस आ जाता है, ठीक है ना। तो टू डू दैट guys, it is end of your session today. So we will join tomorrow at 9:05. Before 9:05, you guys should join. Then only I am able to. Sir, if the file is deleted by mistake, can I recover it? I have answered it several times. No. Sir. Sir. Yes. MB कमांड में जब अपन कॉपी वो मूव करते हैं तो जो पहले कंटेंट रहते हैं वो डिलीट हो जाते हैं क्या? MB XY क्या, X का डेटा Y में राइट हो जाता है, X डायरेक्ट S फाइल उड़ जाता है। ओके सर, एक क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आया आज के मशीन टेस्ट में। लिस्ट डाउन द फाइल्स इन ऑर्डर ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ डेट। क्या बोला एक बार? लिस्ट डाउन द फाइल्स इन ऑर्डर ऑफ मॉडिफिकेशन फाइल डेट। हाँ, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ls-ltr, ls-lt टाइम वाइज सेटिंग करता है ये।
इसमें क्या तुमको इंग्लिश नहीं पता है क्या भाई? ये टाइम सेटिंग क्या ना ये किसी मॉडिफिकेशन टाइम मैंने बोला ना सबको भाई, दिस इज मॉडिफिकेशन टाइम राइट? Yes, sir. Time Yes, sir. then LTR R is for reverse order. Those which are new it's okay. English नहीं समझ पाए it's okay. मतलब चीजों को पता नहीं, बट जो लोग पुराना है वो लोग नहीं बता पा रहे हैं, इससे शर्म से बात कुछ नहीं है। तो एल क्या करता है? सुनिए गाइस, एल क्या करता है बाय डिफॉल्ट नाम के हिसाब सेटिंग करता है। ओके, नाम के हिसाब सेटिंग नाम की सेटिंग किया बाय डिफॉल्ट। मैं अगर hey guys stop yourself, I am just muting you. ls minus l it's going to show you and the name setting order, name wise setting. But if you want timestamp, time is in this column, so t लगाओ, time wise setting हो गया। हाँ बोलो, अभी कौन कुछ चला था? सर डिफरेंट वे अरे सब लोग क्यों, अरे वापस में क्यों बात कर रहे हैं? ls login minus u क्या ls login minus u for different way can see about user, it is possible sir? और एक बार क्वेश्चन पूछिए। ls login minus u ls login minus u different way to for अरे तुम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। ls login logins minus u डिफरेंट वे अबाउट यूजर्स के बारे में पता कर सकते हैं क्या सर इससे? मेरे को तो ये पता नहीं है, मेरे को ये पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को पता नहीं है। ls सिंपल रखो, जाने दो। हाँ स्पेस नहीं है सर। ls माइनस l चैट में टाइप करके हाँ साथ में लॉगिन एस माइनस यू, लॉगिन एस एस लॉगिन एस। ओके अच्छा ठीक है। हाँ ये दिखा रहा है। अरे तुम्हारा लाइनक्स में 1 लाख कमांड्स है, तुम कुछ भी कमांड करके तो दिखा सकते, ऐसा कुछ नहीं। यस सर, मैं तुमको नहीं पढ़ाया। ओके चलिए, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ न्यू कमांड टू मी, इट्स लर्निंग फॉर मी आल्सो। नो Sir, I have one question, sir. I am Ajinkya. Hello, can I ask अजिंक्य का टोन मुझे पता है, बताओ। हाँ अजिंक्य बताओ। Sir, what is write a program which is a parent shell script with call child shell script? अरे भाई एक सीधा आपका पर जमा नहीं, गलत हो गया सर कुछ तो। हम लोग कल डिस्कशन करेंगे ये सब चीज। हाँ सर, अजिंक्य भाई एक काम करो, आज का रिकॉर्डिंग हो गया, चैट में जाके टाइप करके क्वेश्चन पूछो। Well, guys, क्लियर आवाज नहीं आ रही। stop yourself. I am now stopping this session. I have a number of one. मैंने 20 दिन के बाद इधर आया हूँ। चलिए बाय। सर एक क्वेश्चन है सर। मजा आ गया। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, बोले तो डेट निकलेंगे आप, पिछले 5 दिन का डेट। पिछले 5 दिन का डेट? हाँ सर, कैसे लिखने का? गूगल करो, मैं बार-बार बोला था डेट। कैलेंडर देख ले। डेट करने का डेट क्या है राइट? डेट सिंगल कोड में 5 day ago, 5 days ago, ago। हेलो हाइपन सर, डी डेट माइनस डेट माइनस आया ना? अच्छा सॉरी, रुको एक मिनट। हाइपन डी 1 मिनट। हाइपन डी, हाँ बोलो। डेट हाइपन डी सिंगल कोड में 5 डे आया। हाँ ठीक है ना? देखो सर, मैंने बताया आपको। यस वेरी गुड। सर एक प्रॉब्लम था कल के लेक्चर के रिगार्डिंग। कल का लेक्चर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम था? हाँ सर, ओरेकल का लेक्चर है, अभी मैसेज आया है ना सवेरे 7 से लेके 10 तक। तो कल का क्लास 10 बजे करेंगे, उसमें क्या है? हाँ वही तो ना। तो बाद में सब लोग आदित्य मैडम को बोल दीजिए, आदित्य मैडम मुझे कांटेक्ट करके बोलेंगे 10 बजे, ठीक है? उसके बाद इंग्लिश का लेक्चर है। हाँ मैं बोला कल का क्लास 10 बजे। सर 10 से 12 इंग्लिश का लेक्चर है। कितने बजे? 12 बजे। 10 से 12। 10 से 12 ठीक है, 4 बजे कर लेंगे, उसमें क्या है? 4 बजे सर इवनिंग वालों का है ना। अरे सुनिए गए प्लीज, तुम लोग आदित्य मैडम बोल दीजिए, आदित्य मैडम मुझे बोल देंगे, ठीक है? टाइमिंग ओके, चाओ सर, चाओ सर, थैंक यू।